Hello students, let us start with the next type of construction. Not type of construction, we can say next. So different alternatives are given. So here this is to construct a right angle triangle. Right angle triangle यानी क्वेश्चन में दिया है right angle triangle यानी एक एंगल 90 डिग्री का होगा. Okay. Then और क्या what will be given? Given the hypotenuse and one side. यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी होगी और वन साइड यानी टू साइड्स एंड वन एंगल 90 डिग्री. ओके, व्हेन राइट एंगल ट्राइंगल इज रिटन मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री दैट यू हैव टू कंसिडर इट. हियर सम इंफॉर्मेशन इज गिवन. We know that a triangle with a right angle is called a right angle triangle. In such a triangle, the side opposite the right angle is called the hypotenuse. All this we have learned. Okay. Example. One short example is there. Draw triangle LMN such that triangle LMN draw करना है such that measure of angle LMN is equal to 90 degree. Measure of angle LMN मतलब क्या? This angle M measures 90 degree. Hypotenuse 5 centimeter. Okay. And MN 3 centimeter. MN 3 centimeter. Okay. अब यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड साइड वगैरह कुछ नहीं है. ओके, वेरी इजीली वी विल गेट इट. वेरी सिंपल इट इज. कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत सिंपल होता है. एज मेजर ऑफ एंगल एल एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल अप्रोक्सीमेटली एंड मार्क द राइट एंगल. ओके, अगर हमें मालूम है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक राइट एंगल निकालो. ओके, एम का मेजर दिखा दो 90 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल. दैट इज द रफ फिगर. ओके, स्टेप्स. तो इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है? एज शोन इन द रफ फिगर ड्रॉ द बेस. पहले क्या करना है? बेस ड्रॉ करना है. देन नंबर 2 एट पॉइंट एम सेगमेंट एम एन. ओके, ड्रॉ रे एम टी टू मेक एन एंगल 90 डिग्री. तो यहां से 90 डिग्री का मेजर लेना है. ओके, एंड ड्रॉ द रे. ओके, 90 डिग्री पहला बेस ड्रॉ किया. देन टेक 90 डिग्रीज एंगल्स मेजर एंड ड्रॉ द रे. ओके, देन ओपनिंग द कंपास. कंपास यूज करना है. यहां से कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है यहां से और यहां पर आर्क लेना है. ओके, एंड ज्वाइन दिस पॉइंट. योर कंस्ट्रक्शन इज ओवर. ओके, समझ में आया? वंस अगेन आई रिपीट द स्टेप. ड्रॉ द बेस, 90 डिग्री का मेजर ले लो. ड्रॉ द रे. ओके, देन कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो और यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लो एंड ज्वाइन द 2 पॉइंट्स. योर कंस्ट्रक्शन इज ओवर. राइट द इंफॉर्मेशन हियर. 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल. ओके, लेट अस मूव टू द practice set number 5. In practice set number 5, 1, 2, 3, 4, 5 examples are given. Okay, this 5th example is given for self study. Students should take examples of their own. Okay, ये तुम लोगों के लिए है. Okay, I am going to explain only these 4 examples. Right? Let us see this in the notebook. Okay, first let us read the example. In triangle MAN, triangle का नाम क्या है? MAN. हमें मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है. Okay, this is triangle MAN. Measure of angle MAN. MAN. तो A यहाँ पर है 90 डिग्री. MAN is equal to 90 degree. Then AN is equal to 8 centimeter. AN is equal to 8 centimeter. MN is equal to 10 centimeter. Means this MN this side is 10 centimeter. Okay, let us construct the triangle. Take the base. How much it is? 8 centimeter. 8 centimeter.
Okay, write the names of the points A, N. Okay, then fix the protractor at the point A and take the angle 90 degree. 90 डिग्री को कोई प्रॉब्लम नहीं आता. ओके, कौन से साइड से भी मेजर करो तो. ओके, देन ज्वाइन द पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट. Measure of this angle is 90 degree. Length of this side is 8 centimeter. Okay, now length of this hypotenuse is 10 centimeter. So take 10 centimeter distance in the compass. कंपास में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है. अब तक का सबसे बड़ा डिस्टेंस अब तक इतना लिया नहीं. ओके, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज टेकन. ओके, then without changing this fix the compass point, steel point on point N और यहां पर आर्क ले लो. राइट, सॉरी ऊपर का, ये ऊपर का डबल हो गया गलती से. ओके, देन join the point, this new point and point N. This is 10 centimeter. Alright, name of this point is M. So this is our construction, triangle MAN, in which measure of angle MAN is 90 degree, AN is equal to 8 centimeter and MN is equal to 10 centimeter. Alright, let us move to second example. Let us read the example. What is the question? In the right angle triangle STU, triangle कौन सा है? STU. Hypotenuse SU, right angle triangle STU. Okay, 90 डिग्री का एंगल तो है. ओके, क्योंकि वो ईयर नेम इज गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 डिग्री का एंगल है. ओके, hypotenuse, length of hypotenuse is given 5 centimeter. So this is the hypotenuse, it is 5 centimeter. Okay, so we have to decide. SU means where to take SU? SU is 5 centimeter. Then the remaining third point is T, STU. Hypotenuse SU is equal to 5 centimeter and length of ST is equal to 4 centimeter. Alright, base भी हो गया. Okay, so first start with the base, construction of base first. So this, how much it should be? 4 centimeter. This is 4 centimeter. Name of the points is T and S. Vertices TS. The distance is 4 centimeter. Then take angle 90 degree from the point T. पॉइंट टी से कितना लेना है? 90 डिग्री. ओके, ज्वाइन द पॉइंट टी एंड दिस पॉइंट. ओके, दिस में एंगल मेजर्स हाउ मच? 90 डिग्री. राइट. ओके, नाउ what is the distance of the hypotenuse? 5 centimeter. Then take 5 centimeter distance in the compass. कितना डिस्टेंस लेना है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन द कंपास. ओके, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस. फिक्स द स्टील पॉइंट ऑन द S point S and make a arc. Okay, so this point which we got, intersection of this is nothing but the point U. Okay, join the point U and point S. What is the length of this hypotenuse? It is 5 centimeter. Okay, here our construction is over. Okay, length of hypotenuse, base, 90 degrees angle is shown, names of 3 vertices is written. That's all, everything is perfect.
Let us move to question number 3. Let us read the example. In triangle ABC, length of AC is equal to 7.5, measure of angle ABC is equal to 90 degree, and length of BC is equal to 5.5. Okay, as we know that one of the angle measures 90 degree. Okay, so draw a right angle triangle. Okay, measure of angle ABC is 90 degrees, so this is 90 degree, this is A, this is C. Length of BC is given 5.5 centimeter. Okay, and length of AC means hypotenuse is given 7.5 centimeter. Alright, the same method. Now no need of explaining more. Take the base, how much it is, 5.5 centimeter. Okay, now you learn everything perfectly up till now. Okay, name the points B and C. Length of this side is 5.5 centimeter. Right, then with the help of protractor take 90 degrees angle at the point B. Okay, make the marking. Right, and then with the help of scale, ruler, join the point B and this new point. In this way, measure of this angle is 90 degrees, show it with the sign. Okay, now what is the length of this hypotenuse? 7.5 centimeter. Take 7.5 centimeter in the compass. Distance in the compass 7.5 centimeter. 7.5 centimeter. Right, don't change the distance. Okay, as it is. Adjusting steel point on the point C, make an arc here. Alright, and then the last is join this point of intersection and the point C. Okay, what is the name of this point of intersection? It is A. Point A. Right, what is the distance of this? 7.5 centimeter. Okay, last once again check. All the names of 3 vertices is given. Yes, ABC it is given. This angle 90 degree is shown. Yes, side 5.5 centimeter. Yes, here side 7.5 centimeter. Whatever things are given in the question, all those things must be shown in the construction. Right, here our construction is over. Let us move to example number 4. Read the example. In triangle PQR, length of PQ is equal to 4.5 centimeter, PR is equal to 11.7 centimeter, and measure of angle PQR is equal to 90 degree. As one of the angle is 90 degree, we know that this triangle is right angle triangle. Okay, measure of which angle? PQR means this is suppose P, this Q, this R. Okay, I think this will go wrong. I think PQ is given and PR is given. PQ is given and PR is given means somewhere we'll have to change this now. Okay, yeah, ऐसा change करना पड़ता है. Okay, so this will have to take as P, this will remain Q, and this will have to take R. Okay, so what is the length of PQ? 4.5. ओके, ये चेंज हमने क्यों किया? क्योंकि ट्रायंगल का बेस हमें मालूम चाहिए. अगर ट्रायंगल का बेस मालूम नहीं तो ट्रायंगल की शुरुआत कहां से करेंगे कंस्ट्रक्शन की? ओके, सो दिस चेंजेस आर डन. लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 11.7 centimeter. Okay, and this angle 90 degree. Okay, let us start with the construction. So what is the first step? Our first draw the base. Okay, so base निकालो. How much it is? 4.5 centimeter. Base is 4.5 centimeter. Okay, write the names. Q, P, 4.5 centimeter. Okay, then from the point Q, take 90 degrees measure. Okay, and join this point and this Q point. This is join.
Okay, then now what is the distance of this hypotenuse? ये hypotenuse का distance कितना है? 11.7. Okay, so in compass take the distance of 11.5 सेंटीमीटर. अब शायद ये सबसे लंबा हो रहा है. 11.7. Can you see it clearly? 11.7 सेंटीमीटर. ओके, ये डिस्टेंस चेंज करना नहीं, ऐसा क्या ऐसा ही पकड़ो फ्रॉम द पॉइंट पी. ओके, तो यहाँ पर, अरे बाप रे बहुत ऊपर जा रहा है. ओके, बहुत ऊपर जा रहा है. विल हैव टू चेंज दिस. ओके, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है वो. ओके, सो वी विल स्टार्ट इट हियर. ओके, नीचे से शुरुआत करते हैं वंस अगेन. तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता ही है. ओके, सो हियर व्हाट शुड बी द बेस? 4.5 सेंटीमीटर. यहां लेते हैं, बेस इज 4.5. 4.5 सेंटीमीटर. ओके, क्यू पी 4.5 सेंटीमीटर. ओके, फ्रॉम द पॉइंट क्यू टेक मेजर ऑफ एंगल 90 डिग्री. 90 डिग्री मार्किंग. ओके, और ये ज्वाइन दिस. ओके, हाउ इट इज ड्रॉन? सी देयर, यहां तक ज्वाइन किया है उसको. ओके, सो दैट now what is the distance of this hypotenuse? It is 11.7 centimeter. Take 11.7 distance. Already it is taken in the compass. Now see this 11.7 centimeter distance. Okay, now without changing this distance, fix the point on the point P and take the arc here. Okay, here point on the steel point is fixed on point P and the arc is taken here. All right, now join the points. This point of intersection, okay, and this point P, join it. Okay, it is joined. This is point P. Point P whose length is 11.7 centimeter. This measure of this angle is 90 degree. This base is 4.5 centimeter. Okay, here our fourth example is over. Okay, and the fifth example which you people have to solve, students should take examples of their own and practice construction of triangles. Okay, तुम लोगों ने ये इनकी जगह पर okay ऐसे अलग अलग मेजरमेंट्स लेने हैं. ओके, अपने खुद के, और ये प्रैक्टिस करनी है. Here 4 examples are given. You have to practice more 6. Right? Okay, here we come to end of this practice set. I will come with the next video with the next point, congruence of segments, and then congruence of angles, and then congruence of circles. Okay, later on.